The filtering. Okay. What is the filtering? It is a deliberate manipulation of information to make it appear more favorable to the receiver. Sometimes we manipulate, sometimes we distort the information, we change the information, and we select uh, only those pieces of information which will be favoring to us. Okay, so this is the process through which we hide some portion of the information in order to have a favorable view of ourselves. Okay, तो फिल्टरिंग का ये प्रोसेस है। उसके बाद इमोशंस भी जो है वो असरअंदाज होते हैं, और इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये हमने बात पहले भी की। इंफॉर्मेशन ओवरलोड इस तरह असरअंदाज होता है कि अगर आप कैपेसिटी से ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप यकीनन उसके ऊपर जो है वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर सकते या अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है। डिफेंसिवनेस जो है वो भी है कि जब आप कम्युनिकेशन जो आपकी सेफ्टी को जो है वो मतलब थ्रेटन करता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो भी आप अंडरस्टैंडिंग जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते। लैंग्वेज के जो इस्तेमाल है वो भी, और नेशनल कल्चर भी, ये हम पहले भी बात करके आए थे। ठीक है। तो देन हाउ टू यूज, हाउ टू ओवरकम, now how to overcome the barriers to effective interpersonal communication. First and foremost thing is to use feedback. Okay, so in order to confirm whether the message which you have conveyed is rightfully understood by the receiver, so there's only one way to know that, that is to use the feedback. It means you must uh, ask the receiver how that how he or she has understood the message. Okay, मिसाल के तौर पर जब हम आपसे कोई सवाल, हम आपको पढ़ाते हैं या कोई चीज सवाल करते हैं या कुछ समझाते हैं, तो बाद में आपसे पूछते हैं हाँ भाई आपको क्या समझ में आया, फिर हम आपसे एक फीडबैक लेते हैं। आप हमें बताते हैं कि आप अगर सही से वो रिप्लिकेट कर पाते हैं जिस तरीके से हमने बात की है, तो इसका मतलब है कि हमारा मैसेज आप तक पहुंच गया। अगर आप उस तरीके से रिप्लिकेट नहीं कर पाते, तो इसका मकसद ये है कि देयर इज समथिंग which is still remaining in order to understand the message fully। तो फिर आप उस बात को दोबारा रिपीट करते हैं और दोबारा वो मैसेज आप देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी चीज होती है कि आप किसी को जब कोई बात करें तो उस तक सही से पहुंचा दें और सही से वो चीजें कर दें। और वो फिर इसकी वजह ये भी होती है कि कभी कभी मैसेज की इनकोडिंग के अंदर हम जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। ठीक है, तो अगला बंदा उसको सही से इंटरप्रेट नहीं करता, वो अपने हिसाब से जो है वो शेयर करता है। ओनली वे टू इंश्योर दैट द मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड एज इट हैज बीन ट्रांसमिटेड इज द यूज ऑफ फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक के जरिए ही आप ये मालूम कर सकते हैं। उसके बाद यू मस्ट सिंप्लीफाई योर लैंग्वेज। ठीक है, नाइस सिंपल वर्ड्स में आप वो बात करें और अगले बंदे तक बात पहुंचाएं। और मैंने कहा ना कि जर्गन्स यूज ना करें, टर्म्स, डिफिकल्ट टेक्निकल टर्म्स यूज न करें उन लोगों के साथ जो कि जिनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, इस वजह से फिर आप जितनी जो है वो लैंग्वेज जो है वो इजी यूज करेंगे, शॉर्टर वर्ड्स, शॉर्टर सेंटेंसेस यूज करेंगे, इतना वो बात लोगों तक पहुंच पाएगी, इतनी आसानी से पहुंच पाएगी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे देखें हम लोग क्यों उर्दू का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो इसकी वजह ये है कि हम एक तो हम खुद भी उर्दू में शायद बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, फिर दूसरा ये है कि हमें ये अंदाजा होता है कि लोग भी इसी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो बात ये होती है कि क्योंकि बात का स्पोकन जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सी चीजें हमें अल्फाज जो है वो हमें हमारी समातों से तब तो टकराते हैं, मगर हमें वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो हम जो क्योंकि जब अगर आप डिफिकल्ट लैंग्वेज या एक एक्सटर्नल लैंग्वेज जो है वो आप आ रहे होते हैं, तो हमारा जहन उसको प्रोसेस करते वक्त जो है वो दो लेवल की प्रोसेसिंग कर रहा होता है। एक तो उसको वो ट्रांसलेट कर रहा होता है अपनी उस लैंग्वेज में जिसमें हम मैसेज को समझना चाहते हैं, फिर दूसरा उसको वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो डबल प्रोसेसिंग जो है वो उसके अंदर आ रही होती है। तो कभी कभी वो डिस्टॉर्शंस की वजह से वो मैसेज उस तक सही होने से नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ये आपकी लेवल ऑफ स्किल्स और नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जितना लैंग्वेज वेदर जो भी आप लैंग्वेज यूज करें उसको जितना सिंप्लीफाई करके पेश करेंगे उतना आपको मैसेज दूसरों तक पहुंच पाएगा। फिर देन लिसन एक्टिवली, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि बात को समझने से पहले अगर कोई आपसे, अगर आप सिविल के एम पे हैं तो आपको काम है कि आप you must listen it and very actively। ठीक है, the listening also helps you understand the message very well। ठीक है, so sometimes people don't listen carefully
and they just give an impression that they have understood and they have listened well. Okay, so it means actually this is it's a problem which hinders in the understanding of the meaning of the message. Okay, then you must constrain the emotions, है ना? Emotional constraints हमारी messages को या हमारी उसके decoding encoding के process के पर असरदार हो जाते हैं, ठीक है? You must watch the non-verbal cues. ये भी जरूरी होता है कि sometime हमें ना अल्फाज के ऊपर ही नहीं आना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि उसके साथ जो है जो अंदाज अख्तियार किया गया था वो क्या था, ठीक है? और जो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था वो क्या था, सेम सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विद डिफरेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विल कम्युनिकेट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है? तो वही अल्फाज अगर आपका अंदाज के साथ ही आप की जो मीनिंग है उसको बदलाव ला सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है? तो एक्टिव लिसनिंग बिहेवियर्स के लिए क्या चीजें हैं जो कि एक्टिव लिसनिंग को प्रमोट करेंगे? तो उसके लिए जरूरी है कि यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट ओवर टॉकिंग, ठीक है? डोंट ओवर टॉक, ठीक है? अब बहुत ज्यादा बोलते हैं और तो फिर आप दूसरे को नहीं समझ पाते, ठीक है? तो इसलिए ये है कि आप बोले फिर सुने, फिर बोले फिर सुने, इससे आपकी जो बात है अगले तक पहुंच पाएगी। बी एम्पैथेटिक, ठीक है? एम्पैथेटिक का मतलब ये है कि आप अगले बंदे के लिए ना एक कंफर्ट जोन क्रिएट करें, ठीक है? और थोड़ा सा ऐसा जोन क्रिएट करें कि बंदा थोड़ा फ्रीली कंफर्टेबली आपके साथ कम्युनिकेट कर सके, बैठ सके। मेक एन आई कॉन्टेक्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट है। जब आप आई कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करते हैं तब आप अपनी बात दूसरे तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं, ठीक है? मैंने कहा कि अगर आप मुंह हटा के बात करें, किसी और तरीके से बात करते हैं तो वो जो है वो कम्युनिकेशन जो है उसमें डिस्ट्रप्शंस क्रिएट करता है। उसके बाद यू हैव टू एग्जिबिट अफर्मेटिव हेड नोड्स एंड अप्रिशिएट फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है? तो जो चेहरे के जो तासुरात हैं और जो जहन जो 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 हम नोड्स नोड्स कहते हैं, यूं अगर हम कहते हैं हाँ यस यू नो, यस यू नो, ठीक है? ये यस और नो और फेशियल एक्सप्रेशंस ये इस तरीके का यूज करें कि अगले को ना मोटिवेट करें। और अगर आप जो है वो चेहरे को बिल्कुल साफ करके बात कर रहे हैं यूं करके तो भी बात जो है अगले तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है? तो चेहरे के जो तासुरात हैं और उनको इस तरीके से हो कि अगले की बात दिल तक पहुंच जाए और वो उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो और उसको फेमिलियरिटी भी जो है वो डेवलप हो और बात को सही से अंडरस्टैंड करें। देन आस्क द क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So then you have to ask questions, okay? In order to in order to make sure that the message which is which you want to transmit has been understood fully, you have to ask the questions in order to use question as a feedback, ठीक है? सवाल पूछें कि आया उनको कोई चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है? सवाल पूछने से भी आपको अंदाजा होगा कि बात कहाँ तक पहुंचती है। फिर यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग एक्शंस और जेस्चर्स, ठीक है? ये जो हमारा जो लेक्चर है आज का, ये आप एज ए मैनेजर व्हेन यू वांट टू गिव द फॉर्मल प्रेजेंटेशन, ये आपके लिए बेहतर जो है वो साबित हो सकता है। और फिर आप एज ए स्टूडेंट भी अगर आप फॉर्मल प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इंटरव्यूज में जाना चाहते हैं, तो भी ये मैसेज आपको या जो है वो आपको ये लेक्चर मतलब मदद देगा। कौन से डिस्ट्रक्टिंग एक्शंस होते हैं या जेस्चर्स होते हैं, ठीक है? अब देखें सिर्फ वो जेस्चर्स जो कि आपके मीनिंग को दूसरों तक पहुंचाने तक जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। काम क्या लोग क्या है, कान कान खुरदना शुरू कर देंगे, नाक खुरदना शुरू कर देंगे, या ऐसे करना शुरू कर देंगे, या कंघी लगा के बाल बनाना शुरू कर देंगे, या इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो प्रोफेशनल मीटिंग्स में या प्रेजेंटेशंस में इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, अगले बंदे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है? अब इन चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ता है। इस तरह की मैं आपको कुछ वीडियोस जो है वो शेयर करना चाहूंगा किसी टाइम कि किस तरीके के एक मैसेज जो है वो आप तक जो है वो डिफरेंट वे में कम्युनिकेट होता है और डिस्ट्रैक्ट करता है अगर जेस्चर्स आपके। मैं बता रहा हूँ कि एक हमने प्रेजेंटेशन अटेंड किया और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और जो प्रेजेंटर था वो क्या कर रहा था, वो बार बार इधर देख रहा है, दीवार की तरफ देख रहा है, छत की तरफ देख रहा है, बात कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप जो है
बात जो है अगले तक सही से पहुंचा नहीं पाते हैं और बंदा जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। देखिए एक आई कम्युनिकेट, एक लिंक डेवलप हो जाता है ना, एक लिंक आपका अपने इंस्टीट्यूट के साथ है, तो जैसे ही आप कहीं और चले गए तो वो लिंक जो है वो रप्चर हो जाता है, वो लिंक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर बात जो है वो वहां पे रुक जाती है, एक इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। फिर पैराफ्रेज जरूरी है कि आप मैसेज जो है आप समझने के इजीएस्ट वे में लोगों तक पहुंचाएं और इंटरप्टिंग स्पीकर, अवॉइड इंटरप्टिंग स्पीकर। और ऐसे लोग जो हैं जो कि दरम्यान में बोल पड़ते हैं, उनसे भी थोड़ा सा उनको आप जो है वो हम बात कर क्या करते हैं, जब क्लास में पढ़ा रहे हैं बीच में कोई छोटी मोटी आवाज आती है तो इग्नोर इट, ठीक है, जस्ट इग्नोर इट, जस्ट बिकॉज के लिए अगर हम हर चीज के पीछे पड़ जाएं तो फिर हमारा जो असल जो बात है वो रुक जाती है, ठीक है, हम उनको उनको इग्नोर करके आगे चल पड़ते हैं ताकि आपकी बात जो है वो कहीं मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन है दो टाइप्स का होता है, ठीक है, एक होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा। So, what is the formal communication? Communication that follows the official chain of command are the part of communication required to do a job. So the communication, the message transfers some message which from one job position to another job position is called a formal communication. As I said, when a manager asks his or her follower or a subordinate to provide him in document, so it is a part of it is maybe called as a formal communication. Okay. So what is the informal communication, which is not a part of the official chain of command, but the communication which in which different employees communicate with each other in order to have a social interaction with others, okay, to satisfy their needs, and it also can improve, the organization performance by creating faster and more effective channels of the communication. Informal communication is also important, in which employees, managers, and different people in the organization share their ideas, share their knowledge, share their experience, share their problems, and solve their problems. You engage in different behaviors, and in which you help the people, you support the people. So, in this way, the support from the co-workers is very much important for satisfaction of the employees on the job. And knowledge sharing behavior is also said to be very important, which creates more cohesion with the group, so it is also an important thing. So this is also the part of as an information communication sometime when that sharing of the information is not the part of the official duty, okay, it is not through the official chain of command. तो कम्युनिकेशन फ्लो जो है उसको आप कह सकते हैं, यू कैन डिफाइन इट इनटू फोर वेज: upward communication, downward communication, lateral communication, and the diagonal communication. What is the upward communication? The communication which any information, the message which transmits from the lower position to the top position in the organization, in the organization hierarchy. Say, for example, you an employee write to the top manager to share your grievance or any problem which you are facing at the job, or any related matter in which you want to have an attention of your top manager. So it is an upward communication, which flows from the down position to the up. And what the downward communication? Any information which is transmitted from the top management to the lower management or the lowest employees. So any message which is transferred from the CEO to the lower manager, the supervisor, and the employee is called a form of the downward communication. So what is the lateral communication? The communication between two equal positions of the organization. Say, for example, when a manager of the marketing shares their sales data with the manager of finance. So it means two equal positions are sharing with the information which is related to each other. So no one is senior, but both the positions are equal. So that is the lateral
lateral communication. And what is the diagonal communication? Diagonal communication is sometimes it may be the downward or it may be the upward, but is communicated from the top to down position or the down to top position of a different hierarchy, and not on the same hierarchy, and not the same department. Say, for example, you are a marketing personnel, but you provide information to the head of the finance, and so it is a diagonal communication, huh? When you are communicating with the person in the department which is not related to you. Okay, so that is the diagonal communication. So sometimes you have to share certain data with other people to whom you are not directly responsible as per your job description. So these are the downward communication flow from manager to employees, and upward from the implies to the managers. Okay, and lateral or horizontal, in which communication takes from implies on the same level. Diagonal, when cut across the both work areas and organization levels. Okay, so by sharing this information and communicating with the employees in the different positions in the organization, there are different networks which are developed, in which sometimes these informations are shared more frequently. Okay? What are those networks? Normally, there are three networks: the chain network, wheel network, and all channel network. The chain network is a network which can be said as when the communication flows according to the formal chain of command. Both upward and downward are the part of the chain network. When the information is shared from one step to higher step to further higher step, so it is the upward communication, and it is a chain command, chain network, because uh, the information is shared on the similar chain of command. Wheel network क्या है? All communication flows in and out through a group leader and hub to other in group member. So when in a particular group which is headed by a single leader or the manager, so what the information is shared by the group leader to the group members is called a wheel network. है ना? All channel network क्या है? Communication flow freely among all members of the network team. So this is the chain, this is the wheel, and this is the all channel group. So आप ये देखिए कि अगर जो क्राइटेरिया है डिफरेंट स्पीड और एक्यूरेसी और एमरजेंस ऑफ लीडर और मेंबर सेटिस्फेक्शन हिसाब से ये जो नेटवर्क है वो इनका हर एक अलग अलग होता है. मिसाल चेन कमांड में क्या होता है? There is someone who is sitting on the top, and he also have different departments or the different sections, and they communicate with each other. Now, it might be the downward and it might be the upward communication. So this is the chain. So it does not they cross the limits of a single chain of command. है ना? So in wheel network, it is a part of the group. Someone is at the leadership position, others are just followers. They may not be the part of a single chain of command, but they are the different people who are working on a different, you know, uh, who are working on in a group on a same and the shared goal. है ना? So this is the wheel network in which someone is in communication with other people of that group. Okay. So what is the all channel group? All channel group is a network in which different positions are formally and informally and very frequently attached to each other. Huh? So this is the all channel network. So speed के हिसाब से क्या होता है? Information sharing is more it is moderate level information sharing in the chain network. है ना? मिसाल के तौर पर अगर आप लोअर पोजीशन पे बैठे हैं, आप एप्लीकेशन देंगे यहाँ इस मैनेजर को, हो सकता है ये कुछ अर्सा रख ले, आपको मुतमईन करने की कोशिश करे, यार मैं आपके मसले हल करता हूँ, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन ऊपर जाएगी. ठीक है? So because they have some control over the way the information is shared between the different positions, है ना? So they are not the information does not share more independently and more frequently over here. है ना? So from the speed perspective, this chain network has a moderate position. है ना? In wheel position, it is a fast. Everyone has a direct link
You can see there is no any steps over here, है ना? There are no any steps. यानी हर बंदा जो है लीडर के साथ डायरेक्ट है. It is a wheel network, है ना? All channel network में क्या है कि everyone of the group is connected with each other, है ना? There is no any leader over here. So the leader, again there is a fast information. So speed से मुराद ये क्या है कि the time which is taken by the transference of the message, from the sender to the receiver. Okay. So accuracy क्या है? Accuracy से मुराद ये है कि the amount of the distortion, है ना, which have a negative impact on the level of the understanding of the message. सो इसमें क्या होता है कि ये दोनों में हाई है. क्यों? कि डेफिनेटली ये फॉर्मल चैनल के जरिए जाती हैं, तो फॉर्मल मेथड ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, और इसमें इंफॉर्मेशन की जो है डिस्टॉर्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, यहाँ मॉडरेट होती है क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत से चैनल से गुजरती है, तो इसमें कोई डिस्टॉर्शन जो हो सकती है. लीडर इमरजेंस की बात जो है वो क्या है कि देयर इज अ मॉडरेट लेवल ऑफ द लीडर इमरजेंस बट देयर इज हाई, क्योंकि इसमें एक जो लीडर है वो बहुत ज्यादा effective है और it has a greater influence over the people, है ना. And इसमें there is no any leader emergence because every person is independent and autonomous, है, खुद मुख्तियार है, कोई बंदा किसी का मोहताज नहीं है. और member satisfaction is there is a moderate and there is low because wheel network में leaders member satisfaction low क्यों होती है कि most of the time the leader is communicating with each with the members, है ना. So there is no any internal communication between the members, right? So there is the high in the all channel network because everyone feel that it has the more importance because he has something to share and he has something to receive, है ना. So every person who is every member in this network is using the both the ends as a receiver as well as a sender, ठीक है. तो ये बात होती है यहाँ पे कि दोनों चीजें यहाँ पे हो रही हैं, तो इस वजह से इनकी जो मेंबरशिप है वो ज्यादा होती है और इनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो इससे ज्यादा होती है. एक और नेटवर्क है, इसको हम ग्रेप पॉइंट कहते हैं, और दैट इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट इज एक्टिव इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. इट प्रोवाइड्स अ चैनल फॉर इश्यूज नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल. The impact of the information passed along the grapevine can be countered by open and honest communication with employees. तो grapevine क्या है? ये एक समझे कि हिडन नेटवर्क होता है और इनफॉर्मल नेटवर्क होता है जो इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सीना ब सीना लोगों तक फैलती है और वो शेयर होती है, तो वर्ड ऑफ माउथ डेवलप होता है, ठीक है. और देखें अगर एक लीडर जो है वो आप अगर एक फॉर्मल मीटिंग करते हैं, ठीक है, और लोगों से आपने बातें की और उनको शेयर की इंफॉर्मेशन और ये चीजें दी, वहां तक आपको सब अच्छा की रिपोर्ट मिल गई और हर चीज मिल गई. बाहर जाके हर बंदा अपने हिसाब से बातें करता है, ठीक है. तो वो एक लिहाज से एक नेटवर्क था जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर होती है. तो सारी आप देखें कि ये ग्रेफाइन नेटवर्क के अंदर ही जो है वो इंफॉर्मेशन जो है फ्रीली जो है वो शेयर हो रही होती है और उसमें बातें कम्युनिकेट हो रही होती हैं, और वो समटाइम जो है जो आप कहें कि अगर जो प्रोपेगेंडा है वो भी यहाँ पे हो रही होती है, रूमर्स वो भी यहाँ पे फैल रही होती है, ठीक है, जो वर्ड ऑफ माउथ है नेगेटिव और पॉजिटिव वो भी यहाँ पे फैल रहा होता है. तो उनको काउंटर करने के लिए आसान बात ये होती है कि यू मस्ट बी वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट इन योर कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉइज. ओपन इन द सेंस कि एवरी एम्प्लॉय मस्ट हैव एक्सेस ओवर द मैनेजर, may have access over the leader. Okay, so if you don't allow the people to communicate with you freely, so it means that people will communicate with some other people in the organization. Okay, so then the way information reaches to you, information is reached to you, maybe distorted, maybe manipulated, sometimes maybe may not be reflecting the factual positions in the organization. So you must be available to receive the information from your employees, okay? And then you must share the information very honestly to the people, very genuinely to the people, and you must maintain the equitability and fairness in your communication, the way you deal with the people, and you must analyze the information objectively, ठीक है. तो ये जब आप इस तरह करते हैं तो फिर ये है कि आप लोगों की एक्सेस में होते हैं, लोग people may feel very comfortable in sharing the knowledge with you,
Okay, so in this way, the network of the grapevine may be discouraged. Okay, so now let us discuss the use of information technology in the communications and how it has transformed the way the information is shared among the organization and different positions and different levels in of the organization. Okay. Okay. What are the benefits of the information technology? It has increased the ability to monitor the individuals and team performance, है ना? And it has resulted in better decision making based on more complete information. Because when you have developed the databases for storing the information, interpreting the information, and developing the different reports, so it is more helpful in taking very rightful decisions. Okay, more collaboration and sharing of the information. It has connected the people. Huh? It has definitely overcome the problems of the time constraint, the cost constraints, and different other constraints. Because when you are connecting with the people through use of the information technology, it means you are available. You are available with each other. Huh? So you are communicating 24 hours of day, 24 hours a day. Okay, 7 days a week. You are in communication with others. Huh? So before the era of this information technology, once people have left the organization, it means they were not accessible to the organization. So to some extent, for the benefit and well-being of the people, that era might have been good. But now, when you reach at the home and you know that a message is received to you by a supervisor or manager or the leader that you must do this and this task. Okay, so although it has created a lot of other problems because the people who are working from home or in home times, so from the HR perspective and management perspective, there are different conditions which apply over here and different questions. But you know that information technology so somehow has supported and has helped us a lot in dealing such issues. Okay, greater acceptability to co-workers. है ना? और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या है और मिसाल के तौर पर किस तरीके से उसमें सपोर्ट करती है. आप देखें there are a variety of ways in which information technology has supported us. Firstly, networked computer system, है ना? So in organizations the intra net have been developed, huh? And different computers who are being used in the organization are networked with each other, है ना? तो उसमें क्या होता है कि linking individual computers to create an organization network for the communication information sharing. कम्युनिकेशन के लिए भी वो यूज होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए भी यूज होता है. ठीक है, तो एक सर्वर बन जाता है और दूसरी जो है आप एक सर्वर से बैठ के आप जितने भी आपके जो यूजर कंप्यूटर्स हैं उन तक आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, सारी जो है वो चीजें आप उन तक पहुंचा सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं उनकी एक्टिविटीज को. ठीक है, तो डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो भी नेट शेयर हो सकती है. मिसाल के तौर पर प्रिंटर्स, फोटोकॉपियर्स, स्कैनर्स और इस तरह की जो चीजें वो एक दूसरे से शेयर की जा सकती हैं एक नेटवर्क अप्रोच के अंदर. मिसाल के तौर पर देखें आपने डिफरेंट ऑफिस जो एक ही लोकेलिटी में डेवलप की हुई हैं, तो आप उनसे उनको कैसे पता चलेगा कि अगर उसके लिए फिर हर एक के लिए अलग अलग प्रिंटर आप नहीं परचेज कर सकते. एक सेंट्रलाइज पोजीशन में आप प्रिंटर या फोटोकॉपियर रखते हैं, वो सारे वो इंटरनेट उन सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो जैसे ही आप कोई कमांड देते हैं तो वो हर बंदा उसको यूज कर सकता है. ठीक है, तो उसके अलावा ईमेल्स के जरिए और इंस्टेंट मैसेजिंग के जरिए ब्लॉग्स और विकीज और वॉइस मेल, फैक्स मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और टेलीकॉम कॉन्फ्रेंसिंग और वेब मेल्स. ठीक है, और ई पोर्टल्स और वेबसाइट्स. ठीक है, और सोशल मीडिया साइट्स और डिफरेंट जो है आपके जो मेथड्स हैं जिसके तहत आप लोगों के साथ कम्युनिकेटेड होते हैं. ठीक है, तो नेटवर्क सिस्टम के भी डिफरेंट किस्में हैं. इंटरनेट है, इंट्रानेट है, एक्स्ट्रानेट है और वायरलेस. ठीक है, या वाईफाई कैपेबिलिटीज. इंट्रानेट क्या है?
an internal network that uses internet technology and is accessible only to employees of that organization. ठीक है, जिस हमने कहा कि आप के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड हैं, तो सिर्फ वो कंप्यूटर्स जो है उन लोगों तक ही एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, वहाँ जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो आप सिर्फ उन कंप्यूटर्स के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। Extranet क्या, an internal network that uses internet technology and allows authorized users inside the organization to communicate with certain outsiders such as customers and vendors। ठीक है, तो कभी कभी आप एक्स्ट्रानेट लिंक भी डेवलप करते हैं जिसमें आपके लिए जो लोग, ऐसे लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, जिसमें आप कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं या दूसरे लोग हैं, विजिटर्स हैं, वो आपके आपके जो है वो एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें, अगर कहीं भी अगर आप देखेंगे आजकल तो वैसे भी एक कस्टमर सपोर्ट जो है उसके नुमाइंदे इंटरनेट के ऊपर भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप थ्रू लाइव मैसेजिंग, इंटरनेट मैसेजिंग, और आप उनके साथ जो है वो मामला शेयर कर सकते हैं। वो चीज़ें जो है वो अपने मामला जो सर्विस इशूज से रिलेटेड इशूज हैं वो आप अपने सॉल्व करा सकते हैं। वायरलेस कैपेबिलिटीज ने भी बहुत सी चीज़ों को, बहुत से कंप्यूटर्स को जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लाइन के जरिए कनेक्टेड हो, और वायरलेस कनेक्टिविटी की वजह से भी वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है वो कनेक्ट किया जाता है और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। How IT can affect organization? IT, information technology, removes the constants of the time and distance. Okay, allows widely dispersed employees to work together. It provides for the sharing of the information. Okay, it increases the effectiveness and efficiency. It integrates decision making and work. It provides more complete information and participation for the better decision. It also creates problems of constant accessibility to the employees. Okay, these were the things which I shared earlier। ठीक है, अगर आपके एम्प्लॉइज हैं उनके साथ आप जो है वो मतलब है कि हर वक्त जो है वो इकट्ठे होते हैं और टाइम और डिस्टेंस का जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद आप जो है जिस तरीके से अगर डेटा बेसिस बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसमें आपके पास जो है वो एक्सेसिबल डेटा होती है और हर वक्त आप उसके डिसीजन मेकिंग में बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके कंप्लीट पिक्चर आप डेवलप कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप समझें कि जो जो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ है उसके दरमियान में गैप नहीं रह गया। ठीक है, आप जो है लोगों को उनके घरों तक भी एक्सेस करते हैं, बंदा घर में पहुंचता है, आप उनके पर्सनल टाइम के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन उससे एक्सेस कर रही हैं। अभी तो ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्होंने जो है लोगों को कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करवाते हैं ताकि उनकी वो लोकेशंस को भी वो ट्रेस करते हैं। हालांकि इट इज क्वाइट इलीगल एंड डिबेटेबल थिंग, but people and companies are doing that like that। Yeah. So this has created certain problems for the employees। Okay, so you have you मतलब IT has encroached the personal space of the employees, है ना? So this is the problem। So there are certain issues while use of the internet and use of information technology in communication। So what are those issues? Legal and security issues and lack of personal interaction। Okay, legal and security issues क्या हैं? Sometime people use company emails very inappropriately and uh, by their own benefits। Okay, and sometimes you lose certain confidential and proprietary information due to inadvertent and deliberate dissemination to the hackers। Okay, so whenever your information is available on internet, or your computers are connected with the internet, and those computers contain and store very confidential information and very secret information, so they can be hacked from remotely. They can be hacked remotely from different locations, and people may they steal your information। Okay, so this is again the security issue and the legal issues as well. Lack of personal interaction। Okay, so this is again whenever you connect people through use of information technology, but you lose a face-to-face interaction, you lose the benefits of the face-to-face interaction and the content। Okay, so in this way the virtual environments cannot
develop a level of understanding between people and the level of the group cohesion among the people, level of the friendships and social networking groups, social groups or social or the sense of affiliation among the groups. Okay, so it is not developed. So that is the basic thing. Only the information is shared, but no any emotions, no any affiliations, no any support, no any things like that. The feelings are shared with the people. So when you are working together in a physical space, you can feel the the presence of the person as a very pleasant sometimes. Yeah. So you develop an affiliation with that person. So that affiliation which you develop with constant and frequent interaction may help you develop more, the positive attitudes about that person. So for the interpersonal, the relationships, the interpersonal contact is very much important. So what we have done by using these computers have, snatched from us the personal intimacy and personal affiliation with the people. है ना? जब आप कंप्यूटर्स के साथ वेरी कनेक्टेड होते हैं ना, तो आपको किसी और की जो है ना, हमारे यहाँ बात करते हैं कि जब आप एक सामने बात करते हैं ना, तो एक हया होती है, या एक आप समझे कि किसी के साथ जब हम बात करते हैं तो फिर एक हमारी मणिया, हम सिंधी में कहते हैं मणिया, आई डोंट नो अबाउट समथिंग इन उर्दू। तो ये है कि हम एक दूसरे का ना लिहाज रखते हैं, ख्याल रखते हैं, और एक दूसरे का जो है ना वो एक एहसास रखते हैं। तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये एहसासात हैं, ये खत्म हो जाते हैं ना जब व्हेन यू ओनली कम्युनिकेट थ्रू दीज डिवाइसेस। ठीक है, तो दीज डिवाइसेस हैव बिकम अ सोर्स ऑफ द कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन, नॉट द फीलिंग। ओके, उसके बाद क्या है, बीइंग कनेक्टेड वर्स बीइंग कंसर्न, है ना? मैनेजिंग इंटरनेट ग्राइड साइट्स एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर यूनिक इनसाइट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. Sometime, we also share these networking sites for sharing the information, sharing our concern, sharing our problems. Okay, so you can use these information technology to connect with the customers who are not available to you, who are not near to you. They can, they share their reviews, their complaints more frequently and more easily, and more honestly. Sometimes, when a dissatisfied customer sometimes does not visit the facility to share his concern. Okay, he simply quit that brand. He simply switch that brand. But if you allow them to communicate their complaints to you through using the internet technology, which is to some extent more safer mode of communicating for that customer, so he will do it, he or she will do it. So it will let you know what are the problems at your end. So if you resolve those problems of those specific customer or customers, so then that there are chances that that person or that customer will become more loyal to you, more loyal to your brand and the product or the organization. Okay? So you can use these things as a, okay. So how to manage the organization's knowledge resources? So sometimes these internet technology, IT technology is used to develop the databases for the employees, and those databases may work as a very helpful resource for the employees. So sometimes we create a communities of practice for groups of the people who share a concern, share expertise, and interact with each other. है ना? ये एक थ्योरी है कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस की। उसमें ये है कि हम ऐसे लोग डेवलप कर सकते हैं जो कि उन एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं और रिसोर्सेज जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। यू कैन यूज दीज IT टेक्नोलॉजीज टू हेल्प इफेक्टिवली एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद कस्टमर्स। ठीक है, और उसके अलावा what is the politically correct communication? Okay. Don't use words or phrases that stereotype, intimidate, or offend individuals based on their references.
ये इनका important चीज है कि whenever you want to to develop a communication channel or when want to communication message, you uh, have to be very careful about the selection of the words. Okay, any word which uh, uses any stereotypical thinking or stereotypical the word or anything which can create unsafe environment for others, which can offend the other people. So this is not a good thing. You must avoid it because it may create many problems for you. So you need to be very polite and you need to be uh, very much careful about using explicit words which may damage your reputation and may damage the comfort zone of other people. So you have to be very careful about those things and the choosing of those words. Okay, so choose those words which carefully, maintain as much clarity as possible in communication. So this is all from our side. Any question?